So, hi, parents. Dr. Himanshi here. And as promised, what we are going to talk about is understanding sensory processing difficulties in our children. So, in this talk, what I'm going to be talking about is what is a sensory system or common sensory processing symptoms in autism, ADHD, and neurodiverse kids, and a little bit on sensory integration therapy. Dear parents, I don't know. There are some parents who would want me to speak in English. Some may want it in Hindi. So what I'm going to do is probably speak in both the languages in between so that you understand what I'm trying to say in this particular talk. So again, for Hindi listening parents, आज हम बात करेंगे कि सेंसरी सिस्टम क्या होता है और जो सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जो हमारे बच्चों में देखे जाते हैं और जो हम अक्सर बात करते हैं ना ओटी में कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना है बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन की ओटी वाले जो डिपार्टमेंट है वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये आज हम थोड़ा सा समझेंगे। सो पेरेंट्स हमें पता है कि इंसान को जीने के लिए या हमें कोई भी एक्शंस करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर इनपुट्स जानी जरूरी है। ठीक है। और ये हमने आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा है कि व्हाट आर द 5 सेंसेस वी हैव, जो बोलते हैं ना, वी हैव आईज फॉर सीइंग, वी हैव ईयर्स फॉर हियरिंग, वी हैव नोज टू स्मेल, वी हैव आवर माउथ टू टेस्ट एंड वी हैव आवर स्किन टू टच। सो ये हमारे 5 सेंसरी और सेंसेस होते हैं। ठीक है। तो साइट या विजुअल जो हम देखते हैं वहां से हमारे कुछ सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन में, जो हम सुनते हैं वहां से हमारे कानों से जाते हैं हमारे कुछ ऑडिटरी सेंसेशंस। स्मेल, जो हम स्मेल करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, वो भी सेंसेशंस हमारे ब्रेन के अंदर जाके प्रोसेस होते हैं। टेस्ट, जो हम खाना टेस्ट करते हैं और कुछ भी चीज जो मुंह में जाती है वो उसे हमें टेस्ट करते हैं। टच, यानी कि जो भी हम टच कर रहे हैं यहाँ वहाँ की सब्सटेंसेस, तो हमें पता चलता है, आंखें बंद है हमें पता चल जाता है कि हाँ हम ये कुछ तो हार्ड चीज फील कर रहे हैं और कुछ सॉफ्ट चीज टच कर रहे हैं। तो ये हमारे बेसिक जो 5 सेंसेस तो है ही। बट डियर पेरेंट्स, आपको ये जो 5 सेंसेस है इसके अलावा भी हमारे बॉडी में 3 और सेंसेस होते हैं। अब इस पिक्चर में सिर्फ 2 सेंसेस एक्स्ट्रा बताए हैं, बट तीसरा जो इनमें 2 जो एक्स्ट्रा बताए हैं यहाँ पे जो डिपिक्ट हो रहा है वो है प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर। इसके अलावा एक थर्ड और सिस्टम होता है जो कि हमारे 7 सेंसेस नहीं बट 8 सेंसेस को बनाता है। उसमें से थर्ड सेंस है इंट्रोसेप्शंस। अब उसके बारे में मैं इस टॉक में नहीं बात करूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बाद में उसके बारे में बता दूंगी। बट अभी आपको जानना जरूरी है कि ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है और वेस्टिबुलर क्या होता है। ये प्रोप्रियोसेप्शन का जो सेंस होता है ये बेसिकली हमारे बॉडी के अवेयरनेस होती है। यानी कि हमारी बॉडी को भी, हमारी बॉडी या हमारी मसल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रिसेप्टर्स है जो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है कि भाई अब मैं ऐसे बैठी हूं तो मेरी पोस्चर कैसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट, राइट। एंड सो माई बॉडी और माई ब्रेन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मेरा पोजिशन बैठने का यही होना चाहिए। ठीक है। सो इट इज माई बॉडी अवेयरनेस ऑल्सो कि अगर मैं माउस को दबा रही हूँ, अगर स्लाइड्स को आगे करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे कितना प्रेस करना है इसके ऊपर, यानी कि कितना ग्रेड ऑफ मूवमेंट्स मुझे देना पड़ेगा सो दैट माई स्लाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन, बेसिकली मीन्स कि बॉडी की अवेयरनेस क्या है कि मुझे पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, और उस पोजीशन के साथ में मेरे मूवमेंट्स कितने हार्ड होने चाहिए। यानी कि अगर मैं फिंगर से कुछ मूवमेंट कर रही हूँ तो हाउ हार्ड शुड बी माय फिंगर,
ठीक है, हाउ हार्ड दैट प्रेस ऑन द ऑन माई माउथ शुड बी। ठीक है, सो बेसिकली ग्रेडिंग ऑफ मूवमेंट्स भी ये डिसाइड करता है, सेंसेशंस इनपुट लेता है, और बॉडी की प्रेजेंस या अवेयरनेस या पोजीशन। ठीक है, अब वेस्टिबुलर क्या होता है कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम अगर मैंने अपना सर ऐसे रख लिया, राइट, इफ आई हैव पुट माय हेड ओवर हियर, सो आई नो समथिंग इज पुलिंग मी डाउन, दैट इज ग्रेविटी, राइट। सो ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे अपनी बॉडी की पोजीशनिंग कैसी करनी है, ये मुझे मेरे वेस्टिबुलर इनपुट्स बताएगा। ठीक है, और उसकी वजह से मेरा बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि इन एडिशन टू दी साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, देर आर टू मोर सेंसेशंस, सेंसरी इनपुट्स, जो कि हमारी बॉडी को लेना जरूरी है होता है, वो है प्रोप्रियोसेप्शन एंड वेस्टिबुलर। ठीक है, सो नाउ इन सबको मिला के ये हमारे 7 वंडर्स ऑफ सेंसरी सिस्टम है, जो कि वेल फंक्शनिंग होने चाहिए in our body. So, we are getting a lot of these sensory inputs environment से। हमें विजन से आजू बाजू का सब दिख रहा है, टच से हमें फील हो रहा है कि हमारे आसपास की जो चीज किस तरह से फीलिंग है, उसमें टच की सेंसेशन हॉट है या ठंडा है या हार्ड है, ये सारी चीजें पता चल रही है। टेस्ट से हमें पता चल रहा है कि व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर माउथ, इज इट स्वीट एंड ऑल दोस थिंग्स। स्मेल ऑब्वियसली, एंड हियरिंग, जो हमारे ऑडिटरी इनपुट्स जो जा रहे हैं, बैलेंस, और दैट इज इक्वल टू आवर वेस्टिबुलर, एंड पोजीशनिंग मीनिंग हमारी प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये जितने भी इनपुट्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जो वो हम एक्वायर कर रहे हैं, और फिर हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं। जब हम कोई एक्शन ले लेते हैं तो वहां से एनवायरनमेंट या हमारी सारी सेंसेशन से हमें फिर से फीडबैक मिलता है कि नहीं, ये जो तुमने पोजीशन लिया वो सही नहीं है, फीडबैक मिल रहा है। और फिर हमें, या हमारी वो जो एनवायरनमेंट थोड़ी सी अब मिली सेकेंड में चेंज हो गई है, तो अब मुझे कौन सा एक्शन या कौन सी बैलेंसिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो ये हमें इक्वायर, इट्स गिविंग अस अ लॉट ऑफ फीडबैक, और वो फीडबैक से फिर हमें सेंसेशंस मिलती है, और फिर हमारा प्रोसेसिंग शुरू होता है ब्रेन में, और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली साइकिल चलता रहता है हमारे ब्रेन के अंदर। सो कहते हैं कि ये, इट इज नॉट वॉलेंट्री, मतलब हम सोच के नहीं कर रहे कि ये हो रहा है, ये एक सबकॉन्शियसली हो रहा है, जहां पे हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा है किसी चीज के लिए। ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन जा रही है, और हमें इसे प्रोसेस मिली मिली सेकेंड्स में करना पड़ता है। सो इसलिए कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, इट इज अ प्रोसेसिंग मशीन, इट इज अ सेंसरी प्रोसेसिंग मशीन। So like I'll try to explain to you, ये जो sensory processing machine जो है, ये कुछ लोगों में थोड़े से सेंसरी इनपुट्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं, तो वी आर ओके, बस इतना ही। और किसी किसी में ये इनपुट्स बहुत ज्यादा चाहिए हमें इन ऑर्डर टू फील हैप्पी, राइट। सो इमेजिन मॉर्निंग को हम उठ रहे हैं, संडे मॉर्निंग है, एंड वी आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, एंड ऑब्वियसली सबसे पहली चीज जो हम सुबह उठ के करते हैं, प्रोबेबली एज एडल्ट्स नाउ, इज हैविंग ए कप ऑफ कॉफी, और टी, और जस्ट वार्म वाटर, हनी, और वट एवर यू पीपल आर टेकिंग। सो जब हम सुबह उठते हैं, कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी कप में प्याली काफी होती है, उतने से ही उनका जी भर जाता है, एंड लाइक दे आर रेडी टू स्टार्ट द डे। Whereas some people will want a big glass of tea. तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। कुछ लोगों को थोड़ी सी चाय पीने पे ही उनको यू नो हैप्पी है, और कुछ लोगों को ज्यादा। सो बेसिकली यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे बच्चे भी है ना, इनमें कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे कप में, जब जैसे सपोजिटली ये जो हमारा कप है, ये एक हमारा ब्रेन है, और जो उसमें हमने चाय या पानी या जो भी डाला है, वो एक सेंसेशन है, राइट, सेंसरी इनपुट्स है। तो इन सम किड्स, a little input coming into their small cups is too much, है ना, it is really too much, and they cannot tolerate that too much of sensations coming into their small cups, or basically they need even little, उससे भी कम चाहिए in order to feel calm or regulated, whereas some kids may require too much of sensations, उनको उतने से काफी नहीं है, उनके ब्रेन को और इनपुट चाहिए to understand everything. So
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वेदर आवर सिस्टम इज ओवर रिस्पॉन्सिव, दैट इज दिस। एंड ओवर रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वी अवॉइड थिंग्स, लाइक बस इतना ही काफी है, बस आई डोंट वांट टू टच दिस, एंड ये है अंडर रिस्पॉन्सिव। अंडर रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हमें बहुत सारी चाहिए, चीजों को इनपुट बहुत ज्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर इवेंट, या इसे हम बोलते हैं सेंसरी सीकर्स। सो दिस बिग कप इन अदर वर्ड्स विल बी अ सेंसरी सीकर, एंड दिस स्मॉल कप वुड बी ए अवॉइडेंट। ठीक है, कि आई डोंट वांट दीज थिंग्स टू, मेरे अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन जा रहे हैं एंड आई एम लाइक गेटिंग इरिटेटेड एंड लाइक आई डोंट वांट टू feel get more sensation. So these are the two types of spectrum होता है एक तरह का, it's a big spectrum कि some population or some kids who are coming to us have really they are under responsive, and some of them are over responsive. In other words, they are sensory seekers and some of them are sensory avoidant kids. एंड देन व्हेन जब हम उनकी थेरेपीज वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट वी आर बेसिकली एमिंग इज कि दे शुड बी रेगुलेटेड, यानी कि मीडियम साइज इनपुट्स आए और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर एक्शंस ले लें। सो दिस इज व्हाट आवर एम इज, कि we don't want a very over responsive kid, we don't want a very under responsive kid, we don't want too much of seeking of stimulus, and we don't want too much of avoiding also the system of the sensory inputs, and therefore we want somebody who is regulated कि भाई इतने में अपना regulation हो जाना चाहिए, calm down हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये एक रेगुलेटेड चाइल्ड है। व्हेन आवर सेंसरी सिस्टम्स आर वर्किंग इन द राइट ऑर्डर, कि सारा जो इनपुट हमारे ब्रेन में जा रहा है और उसको हम प्रोसेस कर पा रहे हैं और हम राइट एक्शन ले पा रहे हैं, तो दैट टाइम आवर किड लुक्स रेगुलेटेड, काम डाउन है, ही इज डूइंग हिज वर्क विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय टू मच ऑफ स्टिमुलस, or whether he is seeking. So यहाँ पे दिख रहा है कि ये kid is like he is getting too much of sensations from his environment. बहुत ज़्यादा sensory input जा रही है and therefore he is becoming hypo-responsive. And in this case he is sensory avoiding. He is closing his eyes, he is closing his ears. तो जो भी sensations उसकी body के अंदर जा रहा है, he is like enough, I don't want more. And इससे ज़्यादा होगा तो I will break down. Whereas in the other case, this hyperactive kid, like he is like on the go. He wants more and more of sensations and उसको सभी चीजें चाहिए, सभी चीजों को टच करना है, ब्रेक करना है। He just wants to get the feeling of the entire environment, and therefore he becomes an hyperactive kid who is trying to seek a lot of sensory inputs from his environment. So in our kids also, we might have seen ki, sometimes the kids are very hypo responsive to certain stimulus, whereas sometimes they are so hyperactive, right? So with this you are going to understand as and as I go ahead with my presentation, so that you understand ki acha you yourself will realize ki अरे हाँ, this is right, ये particular item करते समय my kid becomes very hyper and this he is just avoiding it. ठीक है? Okay. So now, like, what is the sensory processing disorder? Now, बोला जाता है कि जब sensory signals are not organized into our brain, हम उसे अच्छे से process नहीं कर पाते, तो what we suffer is from sensory processing disorder. एंड ऑब्वियसली ये जो chaotic प्रोसेसिंग हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से what happens is that it is going to impact our behavior. It is not going to let us be attentive to do certain tasks. एंड ऑल्सो जब हम सोशल सेटिंग में चले जाते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू टेक इन सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग, और वी वांट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, sensory inputs, and therefore it becomes difficult for these kids to socially participate in any activity. So uh, so basically it is not the fault of the child ki why it is happening. It is actually the problem inside their brain, which is not able to process this information properly. So like I told you, under responsivity is a person whose cup size was very large, and मैंने बताया कि वो एक sensory seeker है because उसको too much of sensory input चाहिए to understand the situation and then react.
So again, this PPT explains that the individual may not register sensory input well, and they actively seek for more stimulation to feel regulated. यानी कि उन्हें और भी कप में information चाहिए in order to understand what is the situation. So what happens is these kids will start moving, constantly move. They will be very fidgety. They will be jumping around. They will be chewing on non-food items or even clothing को मुंह में डालना. They want more sensations, sensory inputs. They they don't even understand. They may just crash against somebody, or they may bump against somebody who's on the in front of them, or they love rough play. मतलब इधर भागा उधर jump किया उसको feel किया. And so what happens in such kids? They have difficulty in sitting in one position, and they are not able to maintain their posture. ठीक है? So like I showed you in my previous slide, that picture of the child who's like becoming कि उसके आजू बाजू की चीजें is like in a full earthquake situation. So these children are always on the go, right? So on the other hand, like I explained in the picture कि avoidant kids कौन होती है जो कि जिनका cup size छोटा होता है और वो बहुत ही over sensitive, over responsivity, they suffer from that. And these individuals will register sensory inputs intensely or may actively avoid it. And for them क्या होता है, the world feels so overwhelming, इतना overstimulate हो जाते हैं that they want to just close their ears and shut their eyes and all those things. So in these kids, how it will look like, they will be in extreme distress from a light touch or noise. जितने भी हमारे sensory मैंने आपको 7 wonders बताए अपने sensory system के, वहां से उनको डिस्ट्रेस मिलेगा. द सेंसेशन विच कम्स इनटू द ब्रेन विल नॉट कॉज देम काम, बट वो डिस्ट्रेस हो जाएंगे. एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होंगे उनके टेक्सचर्स को लेके या क्लोथिंग को लेके. एंड व्हाट दे वुड बी डूइंग इज लाइक इफ समबडी इज ट्राइंग टू हग देम, दे लाइक डोंट टच मी, in crowded places they just get so overwhelmed, and bright lights can also give them so much a problem, they'll shut their eyes. And so obviously it becomes very difficult for these kids to tolerate even a normal sensation which a normal kid will be able to enjoy. So what happens now, अगर इस तरह से बहुत ज्यादा sensation उसके अंदर जा रही है, तो the child will start crying, है ना? If somebody even touches him, or he will refuse to wear any kind of clothes which are of a particular texture. So here, let us talk now in detail about these 7 wonders of our sensory system. So सबसे पहले है हमारा vision, vision और उसमें हम देख रहे हैं कि जो image है, जहाँ पे भी environment में कुछ भी image होती है, उसकी image के जो sensations, sensory inputs हमारे eyes में जाती है. आईज के जो कर्टन जो होता है रेटाइना पे, ये इमेज इन्वर्टेड होती है. And when it reaches our brain, it just again the brain will process all the sensory inputs which are coming through it, and will now again make it as a proper image and erect image, and we will be able to process this information properly if our visual system is in the right order. But what happens to a child who is undersensitive or who wants more sensations to come in? So he will keep on watching, that particular object very carefully. So lots of kids, some of the kids come into my room and like they are watching that light, and oh, they get attracted to that computer light and all, and like they'll keep on pressing the button and all those things. They want that visual seeking hote hain ye bacche, right? And some of them, when you give some letters or some object, they will turn it, twist it, they'll keep on turning, twisting. Again, they are seeking visual information from that particular object. And therefore whatever time they are taking to react, unka reaction time will become less. Whereas on the other hand, a child who is very avoidant to visual inputs will try to again will be very happy with the small details rather than the whole picture. He will get easily distracted, and difficulty in locating objects. Like, so supposedly you try to tell him to, okay, get me that object from that table. So he will have difficulty in understanding कि मुझे देखना क्या है. नहीं, he wants so much of sensations are coming from, supposing you tell him to get the book from there. There's a pencil, there is a rubber, there are so many other things on the table, and he won't understand कि मेरे को कौन सा sensory
input जो आ रहा है, and which I am supposed to understand, and he may have difficulty in locating that I am supposed to take up the book, and there are, because other inputs which are going into his brain is confusing his mind. You got it? So also such kids will not be able to sleep when there is even a small ray of light coming into his room. He wants that room to be completely dark, so therefore that comes, ki sleep hygiene important is. Those kids who are oversensitive may need the room to be completely dark, and somebody is doing some activities in the next room, he will be disturbed by that as well, and therefore they may have sleep disturbances also. So things have to be set up in a specific way उनके लिए. They would prefer that kind of information in order to act properly. Now coming to the taste, we know कि हमारे 5 senses है: sweet, sour, salty, bitter, savory. और हर एक पहले बोला जाता था, in earlier time they used to say कि okay, this part is for spicy, this is for sweet, and all these things were destined to particular part of the tongue. But now it is no longer like that, and they say कि every taste, अगर taste receptors है हमारे tongue में, तो they will be able to detect all the kind of taste coming on into their mouth. बट कमिंग टू दीज न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स, हमारे जो बच्चों में ना क्या होता है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑल्सो. समटाइम्स दे डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग, but some studies have shown that they may be very too much addicted to sweet taste, or they may like, very strong taste, like especially अगर वो sensory seeking behavior की तरफ है, तो they will prefer very strong taste, like spicy होना खाने का, and sweet होना. Extreme जो taste होते हैं उनको बड़ा attract करते हैं. And some of them may eat everything, even a non-edible part. Like some kids are so much कि उनको और भी sensation चाहिए mouth में to understand what they are dealing with in this environment. So they'll eat anything to just feel कि okay, what's there in my environment and all those things. Whereas a child who is oversensitive or who's sensory avoiding will no, not want to try too much of different kind of taste. He'll want a bland food, and that too monotonous food, and he will not want to change his preferences. Uh, Also, he will eat very small variety of fruits and vegetables, so he becomes a very picky eater. And most of the kids, they come to us with a lot of eating troubles, and they like थोड़ा सा भी पीस माउथ में गया बच्चों का, तो they'll gag on that particular food. So they are oversensitive, and they do not want to, they're again avoid having an avoidant behavior in the taste sensations. Now coming to the sound, the hearing capacity of the child. It may be a normal child is able to understand the loudness, the pitch and tone, कि कहाँ से टाइमिंग कब आ रहा है, और लोकेशन कहीं वो सेंसेशन दूर से आ रहा है या पास से आ रहा है. So in normal setting, we are all able to make out the differences in these kind of sound key characteristics. But in our kids, in neurodivergent or autistic kids, may they have an delayed auditory processing. Yani ki you keep on calling their names, okay, come here. Beta idhar aao. So they'll not be able to hear their names only. So that is what when we call na ki the child is not having his name calling presence नहीं है. यानी कि उसको 10-20 बार भी बोलो तो वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. यानी कि क्या हो रहा है, उसमें डिलेड ऑडिटरी प्रोसेसिंग हो रही है, राइट? And also, when the mother is like, changing her tone, whether it is a happy tone or a sad tone, in such kids they're not able to even differentiate whether it is an emotion, what is the difference in that emotional tone. So what studies have showed is a child who's able to, respond immediately to that auditory stimulus has got better outcomes, right? And those kids who do not respond to auditory stimulus may not have that good communication skills. So again, like when we are talking about the small cup and the big cup, when they have a big cup, what they are going to do is they want more sensations to come in. उतने से काम नहीं बनेगा. 10 बार बोलो तो नहीं सुनाई देगा उनको. So they do not respond to their name. They will repeat sometimes, in order to please their mind, they want some more noise to come into
the environment. जो calm environment में उनको पसंद नहीं आ रहा कि they want more sounds to be coming, so they'll start generating their own sounds, which is called as echolalia. They'll repeat the same phrase over and over and again. So they are trying to they have this auditory seeking behavior. And like I told you, their reaction time becomes very late, and some of these kids who are sensory seeking, they will perform better when they are having a big chaotic environment, background noise जब हो रही है, तो they will be able to perform better. Whereas those who are oversensitive or avoidant kids, they are very sensitive to sound or noise, voices, and they need a superior pitch for perception. Yani ki, so therefore, I tell my parents, please speak a little loudly to those kids who are avoidant. You have to speak loudly or with a louder pitch or a tone ko change karo variation, because they are not able to get that kind of a sensory input, right? Sensory input के लिए उन्हें that kind of difference in the sound quality लगेगा. Then they may also have difficulty in maintaining focus on the speaker, obviously, because they are too much distracted or they don't want too much of information, and they get easily startled by sounds, and they make noise while working. Even these kids, their humming sound, depending upon like which sound he prefers. And obviously when there is a large crowd, these avoidant kids will be go in one corner, and like they get so overwhelmed by the now, just the opposite of a seeker. Now, smell, here we should understand कि the pathway in which the smell goes into our nose directly hits the brain. The sensation जो यहाँ से जा रही है, हमारा brain इतना close है, it just directly reaches the brain. So it's a very short path होता है from smell to sensory inputs to the place where they have to be processed. And we all know कि smell is linked to emotions and memory system. यानी कि if you smell something which is being cooked in your kitchen, you will know what exactly it's being cooking, and also you will associate that, supposedly अगर घर में cake बन रहा है and you can smell that cake smell, and you can associate it with oh, it's my birthday today and therefore cake बन रहा है, and oh wow, last year तो देखो कितना अच्छा केक बना था, and it was so tasty, yummy and all those things. So you're associating that emotions to, and मतलब the smell is linking that emotions also and whatever you remember about that food system. So areas of the brain affected by the smell, by smell deprivation also is affected in the autistic brain. So sometimes, in such kids, uh, they uh, they are not able to understand, or they are not able to link the emotions to the memory of that particular smell. सो ब्रीदिंग, जो स्टडीज की गई उसमें देखा गया कि ब्रीदिंग इज नॉट अफेक्टेड, जो स्टडीज की गई और जो नॉर्मल किड्स को स्मेल करवाया गया प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, यू कुड सी द फेशियल changes in their behavior, or you could see that breathing rate, either जो pleasant odor they kept on smelling well, and unpleasant में they just held their breath, whereas in autistic kids you will see कि अरे no, changes is only happening when they are exposed to a pleasant or an unpleasant odor. uh, and it has been seen कि in some kids तो इतनी दूर भी smell होगा, they'll be able to smell that. And some of them related to more. Okay, so they are saying over here कि in some studies what they found out was जितना ज्यादा उनको smell sensitivity होगी, मतलब they will not be able to, even the smell of your dress may irritate them. So it will lead to a lot of chaotic problems in their brain, and therefore they may go into a severe autistic trait. Whereas those kids who are able to tolerate those kind of smells are still on a little better uh, severity in the autistic traits. So what they say over here in studies is कि अगर आपकी स्मेल आइडेंटिफिकेशन इम्पेयर्ड है, देन आपकी सोशल स्किल्स भी पुअर हो सकते हैं. Now coming to smell, those kids who are having a big cup or sensory seekers, they will have an impaired odor detection. They will be unable to determine when the food has gone bad. Imagine they may just eat that food,
which is dirty, and they may not even feel कि वो dirty है food, बासा है and all those things. Uh, Also they, अगर हम उन्हें पूछे कि कौन सा स्मेल है, स्वीट है, सार है, they will not be able to make out. They may have difficulty in identification or discriminating the smell. Whereas those kids who are oversensitive or those who are avoiding any kind of smell sensation, they have higher food refusal. Obviously, just smell which is coming from the food, they may just dislike it, and some of them may be very unwilling to go to public space, because in that public place also there's so much of smell which is coming out, which they are not able to understand, and gives rise to overwhelming situations. And some of them may to even vomit or even gag to certain odors, not even food, we are talking about just smell. Say they may feel very pukish. So coming to the touch sensation over here, we need to understand that on our skin we have a lot of receptors which are taking in the inputs of light touch, texture. Some of them receptors are designed to understand what is pressure, vibration, sustained pressure के लिए अलग receptors होते हैं हमारे skin पे, and pain and temperature के लिए अलग होते हैं. Now, coming to this kind of a problem in our kids, those who have got a big cup, they will not feel the pain or cold. They will be unaware of being touched. They do not notice any food on their face. They may be looking so while eating food, they may not feel anything on their face if something is touching, or when their fingers are getting, dirty, and so they are unbothered about these conditions. So sometimes when you put his hand in the bag and he's trying to locate the thing he wants from his bag, he may not be able to find it in the school, कि उसकी book कहाँ पे है, उसका pen किधर, because there are so many sensations in that closed bag. And such kids may prefer very heavy and tight blankets around them. They will love crunchy food, whereas oversensitive kids will dislike textured food. They will be bothered by clothing, and they will dislike light touch on their face, or even उनको कोई थोड़ा touch भी कर लिया ना, they will like, oh, I don't want to be touched. They may feel excessively ticklish, and they hate being dirty. Now coming to the most important part, and that is of balance. We should understand कि जो balancing organ हमारी कान के अंदर है, it is in the inner ear, and these are the semicircular canals which detect the motion, and that is the receptor. ये receptor होता है जहाँ से sensations आके हमें पता चलता है कि कितना motions हमें करना है, feedback जो होता है, और gravity यानी कि like I told you, the balance. So it all these receptors which are present inside our ears is called as a cochlear system, and basically इसमें एक cochlear organ है और एक से semi circular canals है which help us in understanding the motion and gravity which we are facing while we are moving. So those kids who have got who are undersensitive, and those who are seeking will always be, you'll see them always rocking and swaying while sitting. They won't be able to sit in proper position. They'll always move, and they will always wanting to run, bhagna idhar udhar. And they don't seem to get dizzy. We may feel dizzy, but these kids will keep on running here, there, and sometimes putting, their head down, and they love to spin. Such kids, those who are seekers, and those who are avoiders, they will have frequent falls. They have difficulty in riding a bike, and they're sensitive to movements. They dislike riding on elevators, escalators में उन्हें अच्छा नहीं लगता, and they struggle with walking on even on a uneven surface. Now coming to the position or the sense of movement, like I told you, ki our body awareness and the gravity at which the grade at which we have to press an item or hold it, वो सब की understanding हमारी position या proprioceptive impulses और sensory inputs हमें देता है. And इसके भी जो receptors है, they are present in our muscles. So those kids who have difficulties in, they have seen that kids who have proprioceptive problems, they have issues with their posture, walking, and flexibility and speed. And we always know that movement is connected to our learning. If movement is less, learning is less. If movement is more, learning may be more. But parallelly, they are mutually dependent. So they have said that movement के साथ में learning associated. So therefore, whenever we have kids coming into OT, we are always trying to
control these movements, regulate these movements of the kids. And so they say that those kids with poor movement may be related, may have associations with severe autistic symptoms. Now, coming to those kids who are have a large cup, for will seek out for crashing, squishing activity. They'll crash, bump against other, run around. They are messy eaters. They knock items over when reaching out for them. Before they have reached to that particular item, they may have dropped some other more items around them, and they may have difficulty in going up and down the stairs. And like I said, they frequently bump into things. And those who are avoidant, they will just avoid any physical activities, and they will prefer to be physically supported. They want some, they always lean, to their parents and all. And they will basically keep their arms also very close to them. Obviously, when all these things are happening, there are going to be behavior challenges with the child will face. He may be impulsive, he may have emotional outbursts like crying, he may not be able to regulate his emotions, and you will see a lot of meltdowns happening even in our OT. सोशल डिफिकल्टीज होंगे बच्चों को, एकेडमिक स्ट्रगल्स हो सकते हैं, हाउ टू होल्ड द पेंसिल में नॉट, दे मे नॉट अंडरस्टैंड, दे मे होल्ड द पेंसिल वेरी टाइटली, दे हैव टू राइट बट दे हैव टू होल्ड इट इन द राइट ऑर्डर, तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को. मोटर प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है, एंड ऑब्वियसली दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम एंड फीलिंग ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द पेयर्स. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट, before I go into the strategy for support, I am going to take a small pause over here, and we'll be starting in another meeting where I will teach you parents how to understand your kids and how to understand कि उनमें avoidant nature क्या है, seeking. Because while I was talking to you about the spectrum of the problem, you might have also got confused कि मेरा बच्चा seeker है या avoider है. So एक बड़ा simple way है of finding out कि whether your child is a seeker or an avoider, which I will tell you subsequently. This meeting is getting over, so I'll record another to make you understand how we can grade our kids by ourselves without the help of the occupational therapist.